this is the Triple S Defense Taito. Wow. It is a 300 blackout chambered covert urban sniper stroke counter sniper kind of a weapon, bolt action. बोल्ट एक्शन. पर इसमें कुछ खासियत है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. लेट मी काइंड ऑफ गिव यू एन आइडिया. वाओ. सबसे पहली बात यह है कि जो मेजॉरिटी आपकी जो स्नाइपर वेपन्स होते हैं, दे आर लाइक वेरी लॉन्ग रेंज स्नाइपर वेपन्स. एग्जैक्टली. और जो शॉर्ट रेंजेस के लिए प्रिसिशन वेपन्स, देयर इज अ डिमांड अमंगस्ट बाहर के SWAT teams और स्पेशल फोर्सेस में. एग्जैक्टली. So we wanted to put out a weapon which had that particular capability, and we chose the 300 blackout. वाओ. And the Taito basically is fully suppressed. It's integrally suppressed weapon. It's a bolt action, ओके. right? So हमारी जो Raptor है वो fully automatic weapon है, and it is also integrally suppressed. This one is a bolt action, and the difference is that in this particular instance we have a straight pull bolt action. वाओ. Right? So that's the uniqueness of this one. वाओ. Allows you to take, multiple. I mean, as in, जब आपको repeater shots लेने होते हैं, तो this gives you a certain comfort as well. जो caliber हमने use किया, that is a 300 blackout. It's a good round of ammunition, substantially good stopping power. एग्जैक्टली. Or 7.62 into 35. Now you understand that Standard, 7.62 into 35 has more stopping power than a 5.56. एग्जैक्टली सर. And it generally tends to be more accurate than the 7.62 by 39. एग्जैक्टली सर. Right? जो हमने test किए हुए on metal plates and the legs, we've seen that the terminal ballistics of the 300 blackout is a very very good one. Right? इंडिया में इसकी जो यूज़ है वो कम है, पर हमारे को इस बात पे विश्वास है कि जैसे जैसे हम लोग नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, we will also be sensitizing the Indian market to the kind of products that an Indian company is capable of creating. एग्जैक्टली. ये बहुत आसान है.